Hello everyone, welcome to LaunchPad Education Punjab. Good morning. ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? Good morning everybody. ਜਸਦੀਪ, ਪ੍ਰਿਆ, ਰਾਖੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ, ਜਤਿੰਦਰ, ਅਨੀਸ਼ਾ, ਰਾਧਿਕਾ, good morning ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? How are you all? Good morning Paveen, good morning Satnam ji, good morning. Morning Thakur ji, very good morning. I welcome you all to LaunchPad Education Punjab. As you all know, KBC सीरीज कौन बनेगा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार सीरीज साड़ियां चल रही हैं एंड फ्राइडे सैटरडे संडेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ MCQs डिस्कस करते हैं पर ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ। ठीक है, we will be discussing the MCQs related to polity and as you all know हर सेशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एग्जाम्स आर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एंड नायब तहसीलदार। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग हरमनदीप, जतिंदर, नीरज, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो इस तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी की काफ़ी सारी होर क्लासेस भी लगी हैं। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड तो तुसी जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। दैन PPSC दी डेट साडे कोल है नायब तहसीलदार दी, एग्जाम भी सून कंडक्ट किया जाएगा। सो तुसी अपनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड प्रैपरेशन ਲਈ लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब ਦੇ बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वेयर बाय लाइव क्लासेस होनी है, तुसी अपने डाउट सैशनस स्टडी मटीरियल सब तुहानू प्रोवाइड किया जाएगा। दैन अगर तुसी अपने लेवल के उत्ते तैयारी कर रहे हो दैन यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज। नायब तहसीलदार दी 8 टेस्ट जिहड़े है बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के उत्ते तुहानू प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिहदे विच GS एंड तुहाडा करंट अफेयर का पार्ट जिहड़ा है वो रहेगा। ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दीज बैचेस एज वेल। नंबर्स के उत्ते तुसी कॉल करके इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो ले सकते हो। ठीक है जी। दैन PCS कदों जो मर्जी आए, एक्सपैक्टेड है कि इस साल 2022 में PCS आएगा। तो नॉमिनल अमाउंट EMI ऑप्शन अवेलेबल है, तुसी PCS के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। आप लॉकडाउन का टाइम जोड़ा है वेस्ट ना करिए एंड वी कैन ज्वाइन फॉर द बैचेस फॉर PCS। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द MCQs। एज यू ऑल नो द ड्रिल, आंसर्स मेरे तो पहले तुसी दोगे सो दैट आप एक एनरिचिंग सैशन कर सकिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिथे रिक्वायर्ड होएगी आई विल ऑल्सो प्रोवाइड। तुसी भी वेलकम हो, तुसी मैनू कमेंट सैक्शन विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैनू भी एंड अपने नाल दियां नू भी दे सकते हो। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग आशीष, अवलीन, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन साडे कोल है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन 1 month, विद इन 2 months, विद इन 3 months एंड विद इन 1 year। वेरी क्विकली आंसर्स आएंगे, इवन इफ आंसर्स नहीं पता गिव मी द आंसर्स इन कमेंट्स सो दैट तुहानू याद रहेगा जिथे तुसी मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, ओके। AC 1 month, ऑलराइट। ठीक है जी। जो एमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो इट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन 1 month ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, जिन्हों का A और C कंफ्यूजन सीगा, इट इज 1 month नॉट 6 months। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी। अगर कंट्री विच फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है तो की किया जा सकता है उहदे विच। फर्स्ट, यूनियन गेट्स द पावर टू मेक फाइनेंशियल ऑर्डर्स टू द स्टेट बेस्ड ऑन इट्स ओन पॉलिसीज। सेकेंड ऑप्शन साडे कोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट है, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड। की किया जा सकता है जो नैशनल फाइनेंशियल एमरजेंसी जी डिक्लेयर की जाती है। 1 and 2 सी ऑप्शन आया है A। ओके सर, जिन्हों का 1 and 2 है उन्होंने अकॉर्डिंग सैलरीज ऑफ जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जी है रिड्यूस नहीं की जा सकती है ना। ऑल Avleen and Radhika have said all. Absolutely right. Answer to this question is A। 1, 2 and 3 फाइनेंशियल एमरजेंसी का आर्टिकल केड़ा है? मीनवाइल दसो की है फाइनेंशियल एमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है तो फाइनेंशियल ऑर्डर्स जेडे है स्टेट दे वो यूनियन गवर्नमेंट अंडरटेक लैंदी है। दैन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का बजट एंड स्टेट के एक्सपेंडिचर जेडे है उन्होंने कंट्रोल करती है। उस तो बाद ईवन जी जजिज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजिज उन्होंने सैलरी भी कट किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 360 एब्सोल्युटली यस। चलिए अगले क्वेश्चन दे उत्ते। ऑलराइट, 360 इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट।
पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन एंड डी साडे कोल है फॉरेन अफेयर्स। केड़ा सब्जेक्ट जेड़ा है जेड़ा कॉन्करेंट लिस्ट दे नाल रिलेटेड है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट? आई होप तुहानू लिस्ट्स दे नाम पता है। पुलिस, आर यू श्योर? पुलिस जेड़ा है वो स्टेट दा मैटर है। पीयूष सेज बी, क्रिमिनल मैटर्स। सी, रेडियो एंड टेलीविजन। कॉन्करेंट लिस्ट पूछा है। ऑल राइट, देयर इज अ कंफ्यूजन। कमलप्रीत सिंह सेज बी, एब्सोल्युटली बी बिल्कुल सही जवाब है। पुलिस जेड़ा है दैट इज मैटर ऑफ स्टेट। रेडियो एंड टेलीविजन वी स्टेट दा सब्जेक्ट है। देन फॉरेन अफेयर्स जेड़ा है वो साडी यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, क्रिमिनल मैटर्स। ऑल राइट, आई होप जिन्हां दी गलती सीगी उन्होंने ये जेड़ा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते। Consider the statement regarding State Election Commission. First option, State Election Commission is appointed by governors of the respective states. Second option, State Election Commission conducts elections of panchayats only. Which of the following statement is correct? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Even अगर तुसी regular classes attend कर रहे हो तो तुहाडे वास्ते revision दा question होना चाहिए है। Okay, I have got the right answers. Very good to see. Absolutely, yes. The answer to this question is A. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, म्यूनसिपैलिटी है, उन्होंने भी कंडक्ट करवाता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी, 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट्स विद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दी डेट अनाउंस करन दी पावर जेडी ओ किदे कोल रेस्ट करदी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर कैबिनेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देन वी हैव हिज पार्लियामेंट। वेरी मच इन न्यूज़ इलेक्शंस दी डेट हुने अनाउंस हुई है ना सर्टन स्टेट्स दे विच, तां एक कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए। हाँ जी, डेट जिहड़ी पोस्टपोन भी की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का नाम जिहड़ा असीं सुनिया सी, इलेक्शन कमीशन जिहड़ी है वो स्टेट दे इलेक्शन दी डेट जिहड़ी है उहनूं रेगुलेट करदी है, उहनूं अनाउंस करदी है, ठीक है, या उहनूं डिसाइड करदी है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सी, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement. First statement, the Election Commission of India is a 5-member body. Second statement साडे कोल है, Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general and by-elections. Third statement साडे कोल है, Election Commission resolves the dispute relating to split and mergers of recognized party. केड़ी statement जेडी है regarding Election Commission is correct? D, 3 only. Thakur, Jitinder, Jasdeep Kaur says C, 2 and 3. All right. Election schedule हुने पर डिस्कस कीता है, that is done by Election Commission. Then only A statement जेडी है वो correct है। Election Commission किन्ने members दी body है? Can you tell me? फर्स्ट स्टेटमेंट विच की गलत है? यस एब्सोल्युटली थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही जवाब है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम नहीं है, ईसीआई का काम है। इट इज अ 3-member बॉडी। यस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज टू ए ऑडिट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड मेक फाइनेंशियल पॉलिसी, third sanction the grants to various departments, fourth see that public expenditures are in conformity with the government rules। केडी स्टेटमेंट जेडी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ऑडिटर जनरल वास्ते करेक्ट है? दसो। 2 and 2 3 4 1 and 3, 2 and 3 and then 1 and 4। गुड मॉर्निंग अमनदीप जी, गुड मॉर्निंग। यस, सुशील चंद्रा प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। डी 1 and 4 आर करेक्ट। ओके, देन फाइनेंशियल पॉलिसी कौन बनाता है? ग्रांट्स कौन सैंक्शन करता है? जिन्हां दा भी आंसर डी है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ऑडिटर जनरल का काम की है? पहला गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर नु ऑडिट करना है, उस तो बाद ये देखना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जेड़ा है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जेड़ा है वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो फाइनेंशियल पॉलिसी कौन बनाता है? हु मेक्स द फाइनेंशियल पॉलिसी, एंड उस तो बाद ग्रांट्स दा कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन।
FC आई थिंक FC का मतलब फाइनेंस कमीशन तो ही लिखा है जतिंदर जी ने। पार्लियामेंट ओके एंड सैंक्शनस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ओके उन्होंने ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ फाइनेंस कमीशन ਦਾ ठीक है एब्सोल्युटली बिल्कुल जी फाइनेंस मिनिस्टर एब्सोल्युटली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल BR अंबेडकर KM मुंशी। इजी क्वेश्चंस वी डिस्कस करांगे। C BR अंबेडकर ऑल राइट absolutely C is absolutely the right answer. BR Ambedkar is the chairman of was the chairman of drafting committee. Very easy question, very basic question. Okay ਆਪਾਂ इलेक्शन कमीशन ਦਾ डिस्कस ਕੀਤਾ है 3 member body है ना। इलेक्शन कमीशन ਦੀ एज लिमिट एंड टेन्योर कितना है let me know किन्नू पता है एज लिमिट एंड टेन्योर इलेक्शन कमीशन ਦੀ अपॉइंटमेंट कौन करदा है ये भी दसो ठीक है। meanwhile I'll move on to the next question. Which of the following gave the idea of constituent assembly for India? Simon Commission, Rajaji formula, cabinet mission plan and D Wavell plan. Election commission is appointed by the president. I'm not talking about state election commission. मैं chief election commission दी गल कीती है appointed by president and tenure 65 and 6 years. Absolutely ठीक है जी very good great। दसो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सी कैबिनेट मिशन आंसर आया है ऑल राइट। कैबिनेट मिशन केड़े साल च आया सीगा जिन्हां दा भी आंसर सी है एब्सोल्युटली राइट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दा प्लान जेड़ा है या आइडिया जेड़ा है कैबिनेट मिशन तो आया सीगा है ना 1946 एब्सोल्युटली वेरी गुड। क्लेमेंट एटले ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੇਅਰ ਬਾਈ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ट्रांसफर करनी है टू इंडियंस है ना 1946 इज द आंसर टू इट ठीक है। पावर ट्रांसफर करनी है एंड उसी टाइम पे जड़ा है एक कैबिनेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जड़ा है वो आया सी। नेक्स्ट who among the following can only be removed from the office in the manner and on the grounds like judge of supreme court? A comptroller and auditor general, chief election commission, governor, attorney general of india। जिवें आपां सुप्रीम कोर्ट दे जज नूं रिमूव करदे हां सिमिलर ग्राउंड्स ते इन्हां विचों किस नूं असीं रिमूव कर सकदे हां 1 2 3 and 4 1 2 4 1 and 2 and then we have is 2 and 3। टेक अ मिनट चंगी तरह क्वेश्चन नु रीड करो एंड उस तो बाद आंसर दियो। बी आर यू श्योर बी इज 1 2 and 4। सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जड़ा है दैट इज ओके एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says attorney general jada hai that works on the pleasure of the president। so what is the answer hun das do ki answer hai D। Kamalpreet says C is right haan ji hun aa gaye answers ne okay। भावना says C absolutely C बिल्कुल सही जवाब है 1 and 2। गवर्नर जनरल जड़ा है स्टेट दा उदी तां असीं गल ही नहीं करदे रिमूवल दी है ना प्लेजर थे एंड देन अटॉर्नी जनरल भी आर्टिकल 76 स्टेज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है 1 and 2 ओनली। जिन्हां दा गलत सीगा प्लीज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाए तो असी आंसर्स मार्क कर देने इदां दे क्वेश्चन च असी गलतियां करते हैं है ना। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जतिंदर जी हैज सेड गुड मॉर्निंग लवप्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन who is the highest civil servant of union government? Attorney general, cabinet secretary, home secretary, principal secretary of the PM। very easy question 5 सेकंड विच आंसर्स जेडे है वो आ जाने चाहिए। B cabinet secretary all right we have the answers okay B बिल्कुल जी B बिल्कुल सही जवाब है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट civil servant of union government
ऑल राइट, दैट्स गुड। चलो चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किहदे नाल रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन का केड़ा पार्ट है जिहदे विच असीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की गल करते हैं? भी दसो। बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड देन डॉक्टर सी डी देशमुख। यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रियम्बल। शाबाश, बी पंडित जवाहर लाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, हल्के क्वेश्चंस भी डिस्कस करांगे ताकि बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए क्लास सारे लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, all right, next question. The executive power of union is vested with which one of the below? Prime Minister, Home Minister, Vice President, President. Executive power is related to A, D. All right, President, absolutely. Ashish, Kamalpreet, Thakur, bilkul. Thakur has said A. President has the executive power of the union. ठीक है, एंड स्टेट लेवल पे जब ਅਸੀਂ एग्जीक्यूटिव पावर की गल करते हैं दैट इज विद द गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली क्वेश्चंस कवर करते जावांगे जेडी इजी वंस है। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग A, war, external aggression or internal disturbance, war, external aggression or armed rebellion, failure of constitutional machinery in the state, then financial instability in the country. Very easy question. All right, B आंसर आ गया है साडे कोल। C भी आंसर आया है, failure of constitutional machinery। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 352 दी नहीं है। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन जेडे है ये बेसिस है आर्टिकल 352 के तहत एमरजेंसी नु डिक्लेयर करने लिए। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप। आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा कि प्रेशर ग्रुप की होता है ना। ए, tries to influence from outside. B, its membership is large. C, it actively joins the political parties. D, its members can join any number of groups. Pressure groups दे बारे। C, it actively joins the political party statement जेडी है वो गलत है। अमनदीप जी ने स्किप करता क्वेश्चन। ओके, यस राखी, प्रीवियस क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रेबिलियन। एब्सोल्युटली ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, एक्टिवली जॉइंस पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, जिन्हां दे क्वेश्चन मार्क आया है सुन लो। प्रेशर ग्रुप्स किहड़े हुंदे हैं कि एक्सटर्नल ग्रुप्स हुंदे हैं जेडे कि जिवें आपां गवर्नमेंट दे उत्ते प्रेशर पांदे हैं कि सर्टन पॉलिसीज गवर्नमेंट करे, जिवें क्रांतिकारी लोग नहीं होंगे इदां दे प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ये डायरैक्टली पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करते, ये अपने तरने कढ़ के ये सब चीज़ों नाल गवर्नमेंट दी पॉलिसीज जड़ियां है उन्होंने ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट दी पॉलिसीज नू क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इसका मेन फीचर यही है कि ये पॉलिटिक्स कभी नहीं ज्वाइन करते, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं करते, एक्सटर्नली सरकार दे उत्ते प्रेशर पाते हैं उन्होंने दी पॉलिसीज नू लैके। ठीक है, लाइक राइट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन टाइप। ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन जी है वो मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज नू एज जिवें पब्लिक इन्फ्लुएंस करती है सरकार नू। आई होप दिस इज क्लीयर। ये जड़ा है जिवें कि किसान आंदोलन, एब्सोल्युटली। ठीक है, एक प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि ये जड़े ने पॉलिटिकल पार्टीज जड़ी है पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, एब्सोल्युटली, फार्मर्स एंड ट्रेड यूनियंस, बिल्कुल जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाई कोर्ट इशूज रिट under which article? 220, 221, 213, 226. Very easy halwa question. Good morning Kultar ji, good morning. Okay, we have the answers D, 226. Writs issue कीतियां जांदियां है। Okay, writs issue करन ली wider jurisdiction की दी है, हाई कोर्ट दी है या सुप्रीम कोर्ट दी है? तुहानू पता होना चाहिए कि जेड़ा writ jurisdiction दा एरिया है
ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? हाई कोर्ट 226 एब्सोल्युटली हाई कोर्ट जिहड़ा है फंडामेंटल राइट्स एंड अदर इशूज दे उत्ते भी रिट इशू कर सकता है, वेयर एज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल केस दे विच रिट इशू करता है। ठीक है, सो जिन्हां दा आंसर ओके दे हैव गिवन सुप्रीम कोर्ट डिवाइडर नहीं है, हाई कोर्ट डिवाइडर है। ठीक है, आई होप दिस कंफ्यूजन इज ओवर। गलतियां हो रही हैं तो चंगी गल है, इत्थे गलतियां कीतियां चंगियां, एग्जाम विच नहीं करनियां। ओके, आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, the chief justice and other judges of high courts are appointed by which one of the following? Prime Minister, Chief Minister, Governor and D साडे कोल है President. Chief Justice and other judges. D very easy question है। Absolutely जिन्हां दा भी आंसर D है, that's absolutely right। Chief Justice ਨੂੰ appoint करदा है President एंड देन उस तो बाद चीफ जस्टिस दी राय नाल हाई कोर्ट दे जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, यस, कुलतार, राधिका, लवप्रीत, ग्रेट। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन द प्रीएम्बल, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 एंड डी नन ऑफ द अबव। हुण इहदा आंसर वही कर पाएगा जिहदे पॉलिटी दे बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। The term federal जड़ा है, okay, we have the answers. परवीन has said D, none of the above। फिर किथे आंदा है federal? If इना च नहीं आंदा था, where does federal come? आशीष has said C, article 368 किधे नाल related है? All right, none of the above। Okay, very good। The answer to this question is D, none of the above। किते भी federal word इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच नहीं लिखा गया, इट इज रिटन नोवेयर। ठीक है, आर्टिकल 1 जेड़ा बोलता है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। एब्सोल्युटली कमलप्रीत सिंह जी, किते भी फेडरल वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सानू पढ़न नू नहीं मिलता। ठीक है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट, एब्सोल्युटली। एंड पार्ट 3 केड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन दा? ओके, फनी क्वेश्चन भी हो गया है कि फेडरल की तो लिखा ही नहीं गया। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद आर्टिकल 1 तक दोनों में समझा देता है, पार्ट 3 देखते हैं कौन आंसर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेटमेंट्स देखने चलना बड़ा लग रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट साडे कोल है, इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। It is included in part 3 of Indian Constitution and is therefore itself a fundamental right। Next statement साडे कोल है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनू very soul of Indian Constitution किया है। Then aggrieved party has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated। A, it gives Supreme Court and High Court power to issue writs for the enforcement of fundamental rights। Why are you saying A? Writs केड़े आर्टिकल दे अंदर इशू कीतियां जांदियां? Not true पूछा है। What is wrong in statement A? जिन्हां दा आंसर A आ रहा है, हाई कोर्ट पावर आर्टिकल 226, 32 where a fundamental right has not been violated। Okay, absolutely। ठीक है जी, the answer to this question is A। ठीक है, आर्टिकल जेड़ा है 32 is not related to high court, it is related to supreme court only। Absolutely A statement बिल्कुल correct है, only supreme court। चलिए next question। Under Article 72 of Constitution of India, President has power to grant pardons, reprieves, respite, remission, commutation। Pardoning power of President, I hope तो सारे ने पढ़ी होगी। केडी statement correct है? 1 and 5, B 1 2 3 and 4, 2 3 4 and 5 and then all are correct। Pardoning powers of President, I hope तुहानू पता होगा। Under pardons कंप्लीट रिलीफ जिहड़ा है वो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी सजा जिहड़ी है सुनाई गई है। ओके, 2 3 4 and 5 एंड देन वी हैव ऑल। कम्यूटेशन की है वेयर बाय
प्रेजिडेंट जिहड़ा है एक लाइटर पनिशमेंट जिहड़ी है वो सुजैसट कर दिंदा है। रेमिशन दे विच की है जिहड़ी रिड्यूस कर दित्ती जांदी है पनिशमेंट फॉर अ सर्टन पीरियड। ओके, रिस्पाइट की हुंदा है, रिस्पाइट दे अंदर लेसर सेंटेंस जिहड़ी है पनिशमेंट जिहड़ी है वो घटा दित्ती जांदी है ड्यू टू अ फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर फिजिकल रीजनस करके। फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंट लेडी नू सजा सुना दी गई है लेकिन उसकी प्रेगनेंसी देखते हुए प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो सजा नू घट कर सकता है, ठीक है। सो ये सारियां जिहड़ियां हैं दे आर डन बाय द प्रेजिडेंट, ये सारियां ही पार्डनिंग पावर्स है ऑफ द प्रेजिडेंट। आई होप तुहानू मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए let us move to the next question. Which of the following is not correctly marked under the Constitution of India? First, Panchayat है part 9, and then the municipality 9A, cooperative societies part 9B, then tribunals part 10. Previous questions काफी students ਨੂੰ doubt ਸੀਗਾ, I hope वो confusion ਤੁਹਾਡੀ दूर हो गई होगी। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट दे विच तुसी वो सारे नाम याद रखने हैं, देन तुहानू मीनिंग भी आना चाहिए है कि कम्यूटेशन दा मीनिंग की है, रिप्राइव, रिस्पाइट, सब दा की मीनिंग है। डी, ओके, व्हाट इज रॉन्ग इन डी? डी स्टेटमेंट दे विच गलत की है। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10 विच लिखा गया है। विच पार्ट टॉक्स अबाउट ट्राइब्यूनल्स? 14A, absolutely right, very good, great। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं हम। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, एंड डी वी हैव इज प्रीएम्बल। एक टॉपिक जो आप पढ़ते हैं ना विचों जो आंसर है दा वेरी बेसिकली असी फिलोसफिकल फाउंडेशन की भी गल करते हैं इत्थे कि ये फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। Okay, D, A, D, all right, the answer to this question is D, preamble। आ गया समझ? preamble जड़ा है it talks about philosophy of India। जो भी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का केड़ा पार्ट जड़ा philosophical foundation नाल डील करता है, your answer should be D, preamble, ठीक है, very good। चलिए अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं हम। A very big question, 2 मिनट लगा के क्वेश्चन नु पढ़ लो। फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन दे ऊपर एक और क्वेश्चन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देन सेकंड स्टेटमेंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल हैव द पावर ऑफ even preparing the electoral rolls besides the power of superintendence, direction and control of election of panchayats. Then State Election Commission cannot be removed in any manner from his office unless he demits himself or completes his tenure. Sorry, correct statement regarding State Election Commission 1 and 2. Okay, State Election Commission is appointed, then cannot be removed in any manner. Okay. B, all right, B is the answer। all right, majority of you the answer जेड़ा है वो B आया है। 1 and 2 statement correct है, ठीक है। this was a easy question, I assume 2 and 3 भी answer आया। okay, the answer is B part 1 and 2 statement जेड़ियां हैं that is correct, ठीक है। all right, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे उत्ते। Which one of the following words was not included in preamble of Indian Constitution in 1947? एक क्वेश्चन आप बड़ी बार डिस्कस करते हैं लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज होके आ गई है। फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड डी वी हैव इज इंटेग्रिटी। ओके, 1947 विच इंटेग्रिटी इंक्लूड नहीं किया गया सी, फिर किहड़े साल विच इंटेग्रिटी इंक्लूड किया गया है एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो होर किहड़े वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं? एब्सोल्युटली डी बिल्कुल सही जवाब है। इट वाज नॉट इनिशियली 1947 विच इंटेग्रिटी इंक्लूड नहीं किया गया। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सोशलिस्ट, सैक्यूलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड जड़ा है वो इंक्लूड किया गया, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन सीगा, थोड़ी जी बस फॉर्म चेंज सीगी। नेक्स्ट
The preamble of Indian Constitution serves the following purpose. First, it indicates the source from which the Constitution desires its powers. It also states the objects which the Constitution seeks to establish and promote. Kedi statement ready hai, that is correct. One only. Then we have is two only, both one and two, and D we have is neither one nor two. Statement regarding preamble. Yes, 1976 के तहत socialist, secular and integrity were added. Only two is correct. Okay. C. Both are correct. Both are correct. अच्छा, ये दसियो preamble कितो अपनी power लेंदा है? Desires its power. की source है preamble दा power दा. Okay, Ashish says only two. Okay, C. Alright, the answer to this question is C, both 1 and 2. Preamble start कितो होंदा है? We the people of India. मतलब preamble जेड़ा है वो कितो power acquire कर रहे हैं? अपने इंडिया दे लोगों तो acquire कर रहे हैं. Then objectives तो है ही है. Equality, liberty, fraternity. ठीक है? Absolutely right. Preamble जेड़ा अपनी power कितो acquire करता है? साडा constitution कितो power acquire करता है? People of India. ठीक है, वेरी गुड. वी द पीपल ऑफ इंडिया, गुड टू सी. काफी स्टूडेंट्स नु आंदा सी. नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 6 years डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड देन डी, नो फिक्स्ड टेन्योर. yes, by the people, absolutely right Bhavra ji. The advocate general of state is appointed for a period of 5 years, 6 years, and then we have is C, decided by the president. Okay. ये जेडे president वाले ने ये ध्यान ना पढ़ो. Advocate General of the state. D, no fixed tenure. Thakur has answered. Okay. तुसी C मार्क करके आना है पेपर दे विच. उस तो बाद फिर करे आगे आंसर की चेक करते हैं आपां. फिर आप कहने हैं क्वेश्चन ध्यान नाल नहीं पढ़िया. Advocate General of state, no fixed tenure at the okay, pleasure of governor. I hope this is clear. Advocate General of India ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ is appointed by the president, and then there is fixed tenure ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. pleasure of president ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ठीक है? हाँ जी, haven't seen state. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने state ही नहीं देखा, बस एडवोकेट जनरल पढ़िया है तो आंदा है marked by president. ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं. Which of the following statement regarding residuary power of Constitution of India are correct? A. Residuary powers have been given to Union Parliament. Has been given to Union Parliament. In the matters of residuary powers, the Constitution follows the Constitution of Australia. Then, अगला statement साढ़े को है the final authority to decide whether a particular matter ਜਦੋਂ रेजिड्यूरी पावर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1931 ਨੇ रेजिड्यूरी ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਆਨਸਰਸ. C 1 and 4 ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਯੈਸ, ਵਰਚੁਅਲ ਪਿਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. C, we have got two answers till now. Statement regarding residuary powers 1 and 4 correct mark किया गया है. What is wrong in statement 2 and 3? Residuary powers is taken from the Constitution of Canada. Absolutely very good. ये जड़ा है ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, कनाडा तो लिता गया है. And then कोई मैटर जेड़ा है वो रेजिड्यूरी पावर है उसके अंदर फॉल करेगा या नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द पार्लियामेंट. ठीक है? यस, कनाडा तो बोरो की थी. एब्सोल्युटली आंसर इज C 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म. वेरी इजी. Secularism means that state has no recognized religion of state. Then it means that state ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ religions ਨੂੰ equally treat ਕਰਦੀ ਹੈ. Then secularism means that state regulates the relation of man with God. देखते हैं कौन आंसर करता है पहले. Secularism ਦੇ related correct statement 1 and 2. B.
Radhika, Parveen, Jitinder, Thakur and Rakhi, Priya. Absolutely, this was a very easy question. ठीक है, it is B. 1 and 2 third statement ਜਿਹੜੀ ਹੈ wrong है. State interfere नहीं कर दी man and God the relation ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, great. चलिए next question. लिस्ट ਨੂੰ मैच करना है. ਇਹ लिस्ट ਜਿਹੜੀ है year of formation दी है. गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम 1966, 1972, 1976 and then we have is 1987. next slide ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ options ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ. ठीक है, ये तुसी मैच करना है. I'll go back to the slide ताकि तुसी जड़ा है देख सको. All right, this is the list. A. Okay. Are you sure? I'll wait for a minute. Students answer कर लें. Again, these are the options. Year of formation दी जड़ी है mark करनी है. Sikkim 1972. Okay. B, D, C, D. Okay. Answer to this question is D. 4, 1, 2, 3 year of formation जेडी है. Answer was D. ठीक है. इंडिविजुअली भी जेडे आंसर्स कर रहे हैं होपफुली आंसर्स ठीक ने तो मैच जो करोगे तुसी कर ही सकते हो. ठीक है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद करना है सारी स्टेट्स दा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The members of UPSC Union Public Service Commission are appointed for dash for the term of dash years. कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइम लिए अपॉइंट करता है? Members of Union Public Service Commission, President and then 6 years. Jatinder Singh has answered. All right. Okay, do we have more answers? Very easy question. Members of Union Public Service Commission, Kamalpreet, Ashish, absolutely B, बिल्कुल सही जवाब है. Appointed by the President and then term की है for the term of 6 years. Great. Absolutely. Who is the present Election Commission of India? Present Election Commission. जागते रहो. Which questions I am asking you all? ताकि जागते रहो सारे. ठीक है, चलिए next question. I'll move on. Which of the following is not a fundamental duty under Indian Constitution? To protect monuments of national importance, to develop scientific temper, to uphold the unity and integrity of nation. And D we have is none of the above. Not a fundamental duty. Yes, Sushil Chandra. Great. Daswaji, which of the following is not the fundamental duty? D. None of the above. कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. कुलतार, निखिल, परवीन, जितेंद्र. D. Which of the following is not the fundamental duty? फंडामेंटल ड्यूटीज दी लिस्ट खोलो ते उन्हें पढ़ो. टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ਤੁਹਾਡੀ मॉरल ड्यूटी है. इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. साइंटिफिक टेम्पर, अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज ने. नो, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ मॉरल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाके हुन लिस्ट पढ़ लियो चंगी तरह जिन्हां नूं नहीं पता फंडामेंटल ड्यूटीज. A is the right answer. It is a moral duty, not a fundamental duty. Then scientific temper. This is a very important fundamental duty. उस तो बाद uphold the unity and integrity of the nation. जिन्होंने D आंसर मार्क किया है पढ़ लो जाके fundamental duties. Next, which of the following statement in regard to fundamental rights mentioned in Constitution is correct? A. They are part of basic structure of Constitution. They are permanent in nature and cannot be abolished. Third, they can be suspended partially or completely. हुन जिन्होंने गलती की है फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो फायदा ही है क्लासेस लगाने का. वेयर बाय तो पता चल गया कि हुन मैंने फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक नहीं आता, मैं घरे जाके रिवाइज करना है या घरे बैठ के रिवाइज करना है ना. दसो जी फंडामेंटल राइट्स दे बारे करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 3. ओके
परमानेंट इन नेचर, डी स्टेटमेंट आया है 1, 2 एंड 3, करेक्ट दसना है। थर्ड स्टेटमेंट ओनली 2 एंड 3, 1 एंड 3, ओके। Suspended partially or completely, 3 only, okay. Bhavna says okay, they are a part of basic structure of the constitution, absolutely wrong statement है। fundamental rights ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ basic structure ਦਾ part नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ change ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ subject to basic structure। basic structure change नहीं होना चाहिए, लेकिन ये basic structure ਦਾ part नहीं है। सो वन वाले, हाँ जी, वन वाले जेडे आई एम एड्रेसिंग द थिंग ऑप्शंस वाली, वन वाले जेडे है वो गलत है। देन दे आर परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। जो आप नैशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो सर्टन फंडामेंटल राइट्स जेडे है दे आर सस्पेंडेड, देन दे कैन बी सस्पेंडेड पार्शली और कंप्लीटली। स्टेटमेंट 3 जेडी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 3 आंसर आना सीगा। ठीक है जी, answer to this question is statement 3, D option। I hope this is confusion is clear to you now। ठीक है, and options read करके तो मैं explain कर देता, this is not a part of basic structure, subject to basic structure आपा जेड़ा है इनू कर सकते हैं। then statement 2 is also wrong, they are not permanent in nature, इन्होंने असी national emergency दे case विच abolish कर सकते हैं। ठीक है जी, I hope this concept is clear to you now। ठीक है जी, स्टेटमेंट्स ऑप्शंस कुछ गलती सी साडे वालों एंड मैं एक्सप्लेन कर देता है व्हाट वाज द मिस्टेक। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस इज फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑल इन एयर इंडिया, एंड डी वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दसो जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुली audited by comptroller and auditor general of India? D, state bank of India। okay, और कोई आंसर्स जी किसे दे? A, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुली एयर इंडिया। ओके, ऑप्शंस जेडे है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आए हैं। A, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेड़ा है फुली ऑडिट किया जाता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जेडे बाकी जेडे पब्लिक अथॉरिटीज ने, पब्लिक चीज़ां ने, ये सब पार्शली ऑडिट किए जाते हैं बाय द कैग। ठीक है, एब्सोल्युटली निखिल अग्रवाल जी ने बी आंसर किया है, बी आज राइट है। देयर वाज अ कंफ्यूजन, बाकी सारे जेडे है ये पार्शली ऑडिट किए जाते हैं बाय कैग। ठीक है, चलिए let us move to next question। which of the following is not the parliament part of Parliament of India? President, Rajya Sabha, Lok Sabha, then Lok Sabha Speaker। not the part of Parliament of India, very basic, very easy question। President, Rajya Sabha, Lok Sabha, then Lok Sabha Speaker, D। okay, जो असी पार्लियामेंट की गल करते हैं, I am talking about President, Rajya Sabha and लोक सभा, दिस इज पार्लियामेंट। ठीक है जी, तो लोक सभा स्पीकर जड़ा है उन्होंने पार्लियामेंट दा पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बी लोक सभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स अपर हाउस। लेट अस सी कौन आंसर कर पाता है। नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही सही ने, हाउस ऑफ कॉमन अपर हाउस। ओके, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ऑप्शन है ना। ओके, डी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जेड़ा है दो हाउसेस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ते, उत्थे असी अपर या लोअर हाउस की गल नहीं करते, वो गल आप सिर्फ इंडिया च करते हैं। आंसर इज डी, इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स इज नॉट अपर हाउस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। एब्सोल्युटली डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, right to information in India is fundamental right, legal right, both fundamental and legal right, D
नीदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन केड़ा आर्टिकल जेड़ा है राइट टू इंफॉर्मेशन की गल करता है? लीगल राइट। ओके, आर यू श्योर? बी, लीगल राइट। ओके, सी, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल। ऑल राइट। A, fundamental right. Article 19 subpart 1 of Indian Constitution talks about right to information. तो जो आर्टिकल की गल आ गई तो केड़ा राइट होएगा? इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन। काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत आया है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। आप आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 की गल करते हैं, दैट इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 552। Only Delhi and Puducherry have elected members in Rajya Sabha. C, the age limit for voting was reduced from 21 to 18 65th constitutional amendment ਦੇ ਤਹਿਤ, and then लोक सभा स्पीकर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ oath नहीं लेंदा। D, लोक सभा स्पीकर does not take the oath। C, all right। Was it 65th amendment? Okay, C statement जिन्हां दा आंसर है। फिर केड़ा अमेंडमेंट एक्ट सीगा? सी बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज सी। ए 65th अमेंडमेंट नहीं सीगा, इट वाज 61। अमेंडमेंट 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 21 to 18। ਦੈਨ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਓਥ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਥ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ठीक है, yes Kiran, it's right। 61st speaker does not take oath, even deputy speaker also does not take the oath। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट जड़ियां करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is correct regarding quorum? Quorum is the maximum number of members required to be present in the house. Quorum needs to be completed in Lok Sabha only। For completion of quorum, the 55 members of Lok Sabha and Rajya Sabha the 25 member needed है। If president wants proceeding in any house, तो वो बिना quorum तो भी initiate की जा सकती है। दसो जी, which of the statement is correct regarding quorum? C, okay, for completion of quorum 55 members। All right, B भी आंसर आया है, needs to be completed in Lok Sabha only। Okay, answer to this question is C। quorum ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ maximum number नहीं है, it is minimum number। ਇਹ minimum numbers present होने चाहिए हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੈਨ quorum सिर्फ लोक सभा च ही नहीं, राज्य सभा विच भी रिक्वायर्ड है। एंड जो ਅਸੀਂ कैलकुलेट करते हाँ 1/10 मैंबर करके तो इट कम्स आउट टू बी 55 मैंबर्स लोक सभा दे एंड 25 मैंबर मिनिमम राज्य सभा दे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं दैन प्राइम मिनिस्टर उदों तक हाउस की मीटिंग जी इनीशिएट नहीं कर सकता जदों तक कोरम जड़ा है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बिल्कुल जी, यस कमलप्रीत बिल्कुल सही दसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट? 52, 61, 62 एंड देन 63 आर्टिकल दे उत्ते क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया दे विच, एक केड़ा आर्टिकल सानू दसदा है? 52, 61, 62 and then we have is 63। all right, 62, 63, 61। D, answer to this question is D। article 63 जड़ा है वो कहता है कि we should have a vice president in India। ठीक है, एब्सोल्युटली 63 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिन्हों का आंसर डी है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते। यस भावना 63। चलो नेक्स्ट,
How can vice president be removed from the post? By the full process of impeachment. The Rajya Sabha can remove him by passing the resolution with absolute majority, लेकिन लोक सभा का consent भी necessary है. Then both A and B and D statement है none of the above. Vice president ਨੂੰ ਉਹਦੀ post ਤੋਂ remove ਕਰਨ ਦਾ process ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Yes राहुल 63 बिल्कुल सही जवाब है. By the full process of impeachment की सिर्फ राज्य सभा विच इनिशिएट किया जाता है, then लोक सभा दी majority भी required है. C, B, both. Okay, B. Absolutely. जिन्हां दा आंसर B है, that's absolutely right. राज्य सभा can full impeachment process नहीं हुंदा. पहले राज्य सभा दे विच majority दे नाल, absolute majority दे नाल ये जिहड़ा provision है उन्हें पास किया जाता है, and then फिर लोक सभा दा consent भी जरूरी है. ठीक है, आंसर इज बी. ग्रेट. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट केडी स्टेटमेंट करेक्ट है. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल. इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. इट कैन नॉट बी अमेंडेड. It cannot override the specific provisions of the constitution. Correct statement regarding preamble. Yes, निखिल लोक सभा विच भी जिहड़ी है कंसेंट चाहिदा है. देन प्रेजिडेंट कैन बी इंपीच्ड. आप वाइस प्रेजिडेंट दे केस विच इंपीचमेंट दे प्रोसेस डिस्कस नहीं करदे. ओके, प्रीएम्बल दे बारे राइट स्टेटमेंट जिहड़ी है वो केड़ी है? बी 1, 2 and 4. B. All right, we have the answers. बहुत ही सोच समझ के आंसर्स देते हैं सारे ने. आंसर इज 1, 2 and 4. Can preamble be amended? कितनी बार अमेंड होया है? Who says preamble cannot be amended? Right statement दसनी है. A किदा हो गया 1 and 2. Preamble has been amended है ना, एक बार अमेंड किया गया है. एब्सोल्युटली वेरी गुड. 42nd अमेंडमेंट देता है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए सी. कैन बी अमेंडेड. सो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई ना, तुसी इनू काटा मार दो. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है, नॉन जस्टिसेबल बिल्कुल सही है, कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं. हु इन्वेस्टिगेट्स ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? Parliament, Supreme Court, Election Commission, both A and B. Sorry, both B and C. Who investigates disputes related to Vice President? Expected गलती. C आंसर आया है Election Commission. Okay. More answers. B, Supreme Court. A. किसी का आंसर D भी है. सारे आंसर्स आ गए हैं. B. सुप्रीम कोर्ट. एब्सोल्युटली बिल्कुल जी, द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. जिहड़ा है अगर वाइस प्रेसिडेंट दे इलेक्शन विच कोई भी डिस्प्यूट आए तो उन्होंने रिजोल्व करता है. ठीक है, एब्सोल्युटली सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर. इट इज नॉट पार्लियामेंट रोहित, इट इज सुप्रीम कोर्ट. मूविंग ऑन टू और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. होपफुली नहीं, अगे भी होंगे. विच क्वालिफिकेशन is given in the constitution to be elected as commissioner of election commission? A, being in Indian administrative services. B, shall have experience of at least 5 years as the lawyer of high court. C, completion of 35 years of age. And D, we have is none of the above. Qualification of election commission constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ qualification ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ election commission ਦੀ? देखते हैं कौन आंसर करता है. आई होप ये तुहानू होएगा कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही जुडिशरी की गल हो रही है ना, हाई कोर्ट. तब बी स्टेटमेंट मैं ही तुहाडे वास्ते एलिमिनेट कर देती है ना. जुडिशरी की गल हो रही है तो जुडिशरी कैन नॉट बी देयर. इट इज नॉट बी. बी मैं एलिमिनेट कर देता. नॉट मेंशनड. ए, बी. ओके. The answer to this question is D, none of the above. Constitution which election commission दी qualification prescribe नहीं की गई. ठीक है, answer is D. Most of the cases which Indian administrative services दे कुछ लोग जड़े हैं वो election commission appoint किते जा सकते हैं, not chief but election commission, but ये एक relevant एक prescribed constitution द्वारा prescribed criteria नहीं है. ठीक है,
इट इज नॉट मेंशन प्रॉपर्ली इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग कि इलेक्शन कमीशन की क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। जिन्होंने बी आंसर किया तो बिल्कुल ही गलत नहीं, जुडिशरी की गल हो रही है ना, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, I hope this is confusion is over. Next, which of the following are the powers of Supreme Court? Original appellate appointed by ad hoc judges, C judicial review, D all of the above. Very easy question, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, D all of the above. Okay, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। डी बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट दी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दा एक एग्जांपल दियो एंड दूसरी चीज मैनू ये दसो कि जेडी एपिलेट जुरिसडिक्शन है ਇਹਦਾ मीनिंग की है। एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ की कौन सुप्रीम कोर्ट तो एडवाइस ਲੈਂਦਾ है। यस, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट इज वन ऑफ द एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट दी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दी। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली राइट। ईवन दो स्टेट्स दे विचले डिस्प्यूट्स विच भी सुप्रीम कोर्ट ही रिजोल्व करता है तां ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दे अंडर कौन सलाह लैंदा है सुप्रीम कोर्ट तो? प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स, DPSP, citizenship, and D we have is provision for election commission. DPSP, directive principles of state policy. B आंसर आ गया है, absolutely right. B, directive principle of state policy. Concept of welfare state जड़ा है that is in directive principle of state policy. चलो जी, next question. In how many articles of Indian Constitution directive principle of state policy are mentioned? DPSP article पूछा है, article 36 to 51, 36 to 52, 36 to 53 and then 36 to 54. Okay, A article 36 to 51 absolutely right है। article 36 to 51 जड़ा है that talks about the DPSP। सिंपल क्वेश्चन सी, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस द सेशन एंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आई होप सेशन फ्रूटफुल रहा एंड तुहानू काफी सारे एडिशनल फैक्ट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी तुहाडी कवर हुई। अज दे सेशन पॉलिटी विच आपां कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कीते जिहड़े कि काफी कुछ नॉलेजफुल रहे होंगे तुहाडे वास्ते, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट क्लास तुहाडी पंजाब जीके दी रहेगी साडे इसी चैनल ते सैटरडे नू 10 AM। PDF तुहानू मिल जाएगा साडे टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब दे उत्ते। सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग।